गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है बिल्डिंग रेजिलिएंट टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर। टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया का जो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है डिज़ास्टर रिस्पॉन्स में, क्योंकि वो अनइंटरप्टेड कम्युनिकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, खासकर इमरजेंसी सर्विसेज और पब्लिक के तक पहुंचाने के लिए। लेकिन जो नेचुरल कैलामिटीज़ आती हैं जैसे साइक्लोन्स, अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, वो एक सिवियर थ्रेट हैं इन नेटवर्क्स के लिए। तो कोलेशन फॉर डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है इंडिया के टेलीकॉम प्रिपेयर्डनेस को जो है वो एनालाइज करते हुए डिज़ास्टर्स के कंटेक्स्ट में। इसमें बताया गया है कि क्या वल्नरेबिलिटीज़ हैं टेलीकॉम नेटवर्क्स में। टेलीकॉम नेटवर्क्स एसेंशियल होते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट के समय, क्योंकि ये क्विक कम्युनिकेशन को इनेबल करते हैं, खासकर नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, इमरजेंसी सर्विसेज और सिटीजन्स के बीच में, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स के बीच में। ठीक है। तो टेलीकॉम नेटवर्क्स हाईली वल्नरेबल रहते हैं, क्योंकि इनकी जो है अबव ग्राउंड केबल्स होती हैं, टावर स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ये सब जो है वो डैमेज हो जाते हैं। ठीक है। तो कोस्टल रीजन्स में खासकर जो है वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबिलिटी रहती है, क्योंकि यहाँ पर अंडर सी केबल्स होती हैं। अर्थक्वेक और साइक्लोन जो है वो टेलीकॉम टावर्स को भी डिस्टर्ब कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। टेलीकॉम टावर्स जो हैं वो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई पर रिलाई करते हैं, लेकिन जो है अगर इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर करने में बहुत टाइम लग जाता है तो नेटवर्क जो है वो रिस्टोर नहीं हो पाता है। बहुत से टावर्स जो हैं साइक्लोन्स जैसी हाई विंड स्पीड्स को नहीं जो है वो विदस्टैंड कर पाते, और पोअरली प्लान्ड ओवरहेड केबल्स भी जो है वो बहुत आसानी से टूट जाती हैं ड्यूरिंग स्टॉर्म्स, जिसकी वजह से सर्विस ब्रेकडाउन हो जाता है। ठीक है। तो इसीलिए जो है सॉल्यूशन ये है कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इंश्योर करो क्रिटिकल टेलीकॉम साइट्स पर, रिजर्व फ्यूल स्टॉक्स रखो इमरजेंसी यूज़ के लिए टेलीकॉम टावर्स के। सोलर या फिर हाइब्रिड पावर सॉल्यूशंस भी इंपॉर्टेंट हैं अगर ग्रिड पर डिपेंडेंसी को कम करना है तो। हायर विंड रेजिस्टेंस स्टैंडर्ड्स बनाओ टावर्स के लिए, खासकर साइक्लोन प्रोन एरियाज़ में। अंडरग्राउंड फाइबर ऑप्टिक केबल्स को जहाँ पर भी पॉसिबल है वहाँ पर शिफ्ट करो। एक ही डिग वंस पॉलिसी होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि आप देखते हो ना कि सरकारी लोग क्या करते हैं कि एक बार सड़क बनी, जैसे ही सड़क बनती है उसी टाइम जो है उसको खुदाई करने आ जाते हैं, कुछ ना कुछ पर्पज़ के लिए। कभी वाटर की पाइप डालनी है, कभी गैस की पाइप डालनी है। तो एक बार सिर्फ डिग वंस पॉलिसी होनी चाहिए कि एक बार जब सड़क बन रही है उससे पहले जितनी चीज़ें जो है करनी है करो, उसके बाद एक बार सड़क बन जाएगी तो उस पर जो है वो कुछ अलाउ नहीं होना चाहिए कुछ टाइम पीरियड तक उसको डिग करना। ठीक है। फिर रियल टाइम ट्रैकिंग जो है टेलीकॉम असेट डैमेज की वो की जानी चाहिए सॉफ्टवेयर या एआई ड्रिवन डेटा कलेक्शन के थ्रू। कोलैबोरेशन होनी चाहिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और टेलीकॉम ऑपरेटर्स के बीच में, ताकि रैपिड डेटा डैमेज असेसमेंट हो सके और रिस्टोरेशन हो सके। तो ये रिपोर्ट हाईलाइट करती है पैरामेट्रिक इंश्योरेंस भी, जो कि इंश्योर करे कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स को कंपनसेशन क्विकली मिल जाए आफ्टर अ डिज़ास्टर। ठीक है। तो हम कैसे समझें अब इसको। शॉर्ट टर्म मेजर्स तो ये हैं कि बैकअप पावर सिस्टम्स को स्ट्रेंथन करो, रियल टाइम डैमेज की मॉनिटरिंग करो। मीडियम टर्म इनिशिएटिव्स ये हैं कि नेशन वाइड शिफ्ट होना पड़ेगा हमें अंडरग्राउंड फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क्स पर, और डिज़ास्टर प्रूफिंग करनी पड़ेगी न्यू टेलीकॉम टावर्स की। लॉन्ग टर्म विजन ये है कि 100% डिज़ास्टर रिजिलियंट टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री में होना चाहिए। ठीक है। तो इंडिया का टेलीकॉम सेक्टर जो है वो डिज़ास्टर रिस्पांस के लिए असेंशियल तो है, लेकिन हाईली वल्नरेबल रहता है ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज़। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मंथली लेबर सर्वेस। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है वो एनहेंस करने वाला है फ्रीक्वेंसी और टाइमलाइंस की मैक्रो इकोनॉमिक डेटा रिलीजेस की, जिसमें कि एक प्राइवेट सेक्टर केपेक्स सर्वे होगा, मंथली लेबर फोर्स रिपोर्ट्स होंगी, और एक रिवाइज शेड्यूल है होगा फैक्ट्री आउटपुट डेटा का। ठीक है। 2025-2026 के बीच में। तो जो आईआईपी का डेटा होता है जो अभी 12 तारीख को निकलता है, वो 28 तारीख को अब से निकला करेगा, ताकि जो है वो लैग जो रिपोर्टिंग में होती है उसको रिड्यूस किया जा सके। प्राइवेट केपैक्स सर्वे भी रिलीज़ किया जाएगा अप्रैल में, जिससे कि पिछले 3 साल में जो है कितना केपैक्स एक्सपेंडिचर हुआ है और प्रोजेक्टेड इन्वेस्टमेंट्स क्या हैं वो हमें पता लगेगा। सेक्टर वाइज और असेट वाइज ब्रेकडाउन हमें प्रोवाइड करेगा ये। प्राइवेट केपैक्स जो है वो ज़रूरी होती है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। इससे एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ होती है, ग्रोथ भी इंक्रीज़ होती है, और हायर कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स भी जो है वो देती है हमें। ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एक सर्वे रिलीज़ करेगी
जिसके थ्रू ये मेजर किया जाएगा कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी है प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर के बीच में। तो सर्वे जो है ट्रैक करेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर ओवर द पास्ट 3 ईयर्स, और सेक्टर वाइज और असेट वाइज ब्रेकडाउन इसमें हमें देखने को मिलेगा। जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे होता है वो मई से शुरू होगा, हर महीने आया करेगा रूरल और अर्बन एरियाज़ के लिए। 2017 से चल रहा है ऑफ कोर्स ये, और की लेबर इंडिकेटर्स जैसे कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये सब हमें बताता है ये, है ना। तो इसको हर महीने अब से जो है वो रूरल और अर्बन एरियाज़ के लिए मई मंथ से किया जाएगा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ओपेक प्लस। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ब्राज़ील की गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है वो ओपेक प्लस अलायंस को ज्वाइन करने के लिए। तो ये एक 22 ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ का अलायंस है जो रेगुलरली मीट करता है, डिसाइड करता है कि कितना क्रूड ऑयल जो है वो वर्ल्ड मार्केट में बेचा जाए, ठीक है, या फिर जो है वो लाया जाए। तो ये नेशंस जो हैं इसमें इकट्ठे मिलकर डिसाइड करते हैं क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन को, ताकि ऑयल मार्केट में स्टेबिलिटी लाई जा सके। नेशंस जो हैं इससे पहले एंड ऑफ 2016 में इकट्ठे हुए थे एक फ्रेमवर्क बनाने के लिए ओपेक और नॉन ओपेक कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है। अब ओपेक प्लस में 12 ओपेक कंट्रीज़ तो ऑटोमेटिकली आती हैं, उसके अलावा अज़रबैजान, बहरीन, ब्रुनाई, कज़ाकिस्तान, रशिया, मैक्सिको, मलेशिया, साउथ सूडान और ओमान आती हैं, ओके। ओपेक क्या है? परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ की, और इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1960 में बाय 5 फाउंडिंग मेंबर्स, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला, ठीक है। तो वियना में इसका हेडक्वार्टर है, ऑस्ट्रिया में। इसके अंदर अभी जो है वो 12 मेंबर्स आते हैं, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है न्यूक्लियर फ्यूजन का, जिसमें कि वेस्ट टोकामेक रिएक्टर जो है सदर्न फ्रांस का, वो प्लाज्मा को मेंटेन कर पाया है 22 मिनट से ज़्यादा, ठीक है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? जिसमें दो लाइट एटॉमिक न्यूक्लियाई कंबाइन होकर एक सिंगल हैवियर वन बनाते हैं, जिसकी वजह से मासिव अमाउंट्स ऑफ एनर्जी निकलती है। फ्यूजन जो रिएक्शंस हैं वो एक स्टेट ऑफ मैटर में होते हैं जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। तो जो हमारा सन है अलॉन्ग विद ऑल अदर स्टार्स, वो भी फ्यूजन की वजह से, न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से ही चलते हैं। तो डिवाइसेस जो हैं जो डेजिग्नेटेड होते हैं इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए अर्थ पर, उनको हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स कहते हैं, और उनको हम टोकामैक्स कहते हैं। इनको हम बेसिकली हम आर्टिफिशियल सन्स मान सकते हैं, क्योंकि डोनट शेप्ड मशीन्स होती हैं। ये वो प्रोसेस को रेप्लिकेट करती हैं जो सन के अंदर हो रहा होता है, ठीक है। करंटली लगभग 200 टोकामैक्स जो है वो ऑपरेशन में है अक्रॉस द ग्लोब। एक कमर्शियल टोकामैक जो है वो थर्मल एनर्जी का यूज़ करता है प्लाज्मा की, जो कि फ्यूजन से क्रिएट होती है, फिर उससे वाटर को जो है हीट किया जाता है, स्टीम क्रिएट होती है, और फिर ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो एडवांटेजेस क्या हैं न्यूक्लियर फ्यूजन के? न्यूक्लियर फ्यूजन अगर हम फिजन के साथ कंपेयर करें तो 4 गुना ज़्यादा एनर्जी जनरेट करता है। कोई रेडियो एक्टिव बाई प्रोडक्ट्स भी नहीं होते हैं इसके, और फ्यूल जो है उसको उसमें सिंपली जो है वो हैवी हाइड्रोजन एटम्स ही प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, यूज़ होते हैं। बहुत सेफ़ होता है न्यूक्लियर फिशन के कंपैरिजन में, और फ्यूजन से कोई रनअवे रिएक्शंस होने का भी खतरा नहीं रहता है, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली डायरेक्ट किया है एक सुपरवाइजरी कमेटी को, जो कि नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी के हेड द्वारा चेयर्ड है, कि वो इश्यूज़ को देखे जो तमिलनाडु केरला के अगेंस्ट रेज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू मुल्ला पेरियार डैम। तो नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी एक स्टेचुटरी बॉडी है जिसका क्लियर मैंडेट है रेगुलेट, ओवरसी और इंस्पेक्ट करना डैम्स को, और कोई भी इशू जो है अगर स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ स्टेट्स के बीच में तो उनको डील करना। तो नेशन वाइड अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी चलाते हैं ये सिटीजन्स को एजुकेट करने के लिए अबाउट डैम सेफ्टी, और ये हेडेड होते हैं बाय अ चेयरमैन और असिस्टेड होते हैं बाय 5 मेंबर्स, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मिसिंग ट्राइब। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो असम की लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी मिसिंग ट्राइब ने रिसेंटली अली ए लिगांग फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया है। तो मिसिंग पीपल जो है वो इंडिजिनस ट्राइब है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के, तो जो कि तिब्बतो बर्मीज़ लैंग्वेजेस बोलते हैं। तिब्बतन्स को उनको जो है वो लोबास कहते हैं। वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप्स हैं असम के। इनकी जो है लाइफ क्लोज टू रिवर रहती है। लाइफ और कल्चर जो है मिसिंग पीपल का, ये एग्रीकल्चर और फिशिंग के अराउंड रिवॉल्व करता है। ओरिजिनली ये झूम या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को जो है वो प्रैक्टिस करते थे। इनका मेन फेस्टिवल भी इसी के अराउंड है, जिसको हम अली ए लिगैंग कहते हैं। ये डोनिए पोलो कल्ट को प्रैक्टिस करते हैं बेसिकली। ये सन और मून को वर्शिप करते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बैक्टीरियल सेलुलोज। ये टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली रिसर्चर्स ने रिपोर्ट किया एक स्टडी में कि बैक्टीरियल सेलुलोज जो है वो एक बैंडेज की तरह इस्तेमाल हो सकता है हीलिंग और रीजनरेशन प्लांट्स के में करने के लिए। तो बैक्टीरियल सेलुलोज जो है एक नेचुरल पॉलीमर है जो कि सर्टेन बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं। एक इफेक्टिव मटेरियल है ये प्लांट वुंड केयर के लिए। सस्टेनेबल सोल्यूशन देता है प्लांट इंजरीज से डील करने में। और ये को इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से भी अलाइंड है। ठीक है। तो इसके थ्रू हम देख सकते हैं कि इम्प्रूव्ड क्रॉप यील्ड्स और रेजिलियंस आते हैं और फूड सिक्योरिटी और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन हो सकता है। सेलुलोज क्या है? एक मॉलिक्यूल जिसमें हंड्रेड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स हैं। मेन सब्सटेंस होता है ये वॉल्स ऑफ प्लांट सेल्स में। ह्यूमंस इसको डाइजेस्ट तो नहीं कर सकते लेकिन ये फिर भी डाइट में इंपॉर्टेंट होता है एज फाइबर। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is building resilient telecom infrastructure. This topic is important for your economy section. So India's telecom infrastructure, which plays a critical role in disaster response, uh, and it also ensures uninterrupted communication for emergency services and public, has several vulnerabilities, especially due to natural calamities like cyclones, earthquakes, and floods. Okay, the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, which is a global initiative launched by PM Modi in 2019, has recently released a report analyzing India's telecom preparedness for disasters. So the findings have emphasized the vulnerabilities in telecom networks and outlined key measures to enhance resilience, power stability, and rapid recovery during the emergencies. Okay, so what is the importance of resilient telecom infrastructure? So telecom networks are essential for disaster management as they enable quick communication between the national disaster management authorities and local administrations. It also ensures emergency services and citizens in affected areas remain connected, and state and central governments coordinate the relief efforts. But telecom networks are highly vulnerable due to their dependency on above ground cables, tower strength, electricity supply, and natural disasters can severely disrupt such services, affecting rescue operations and public communication. So, what are the key challenges in disaster prone areas? So, coastal regions are particularly vulnerable as undersea cables connect India to global internet networks. Earthquakes and cyclones can damage telecom towers, leading to massive service outages. Then, telecom towers also rely on heavily they also rely heavily on uninterrupted power supply, but lack of electricity delays network restoration. Okay, so many towers are not built to withstand high wind speeds, especially in coastal states where cyclones are common. So poorly planned overhead cables also get snapped easily during storms, leading to service breakdowns. Okay, so it is important to ensure that uninterrupted power supply is given to critical telecom sites. Fuel stocks are reserved for emergency use at telecom towers. Solar or hybrid power solutions are installed to reduce dependency on the grid. So we also need to mandate higher wind resistance standards for towers in cyclone prone areas. Overhead telecom cables often snap in extreme weather. So the report also recommends shifting to underground fiber optic cables wherever possible. We also need to have a dig once policy where underground cables are laid alongside other infrastructure like water and gas pipelines, so that what we see by the government departments, that once a new road is made, they come just after that and start digging the ground with some or the other excuse. Okay, real time tracking of telecom asset damage using software and AI driven data collection has to be made. Collaboration between Department of Telecommunication and telecom operators must be there to ensure rapid damage assessment and restoration. The report also highlights parametric insurance as a key financial tool, which also ensures that telecom operators receive compensation quickly after a disaster so as to enable faster network restoration. So the future roadmap for telecom resilience in India is given through short term, medium term, and long term vision. So in short term, we can strengthen backup power systems at telecom towers and implement real time damage monitoring systems through software tools. In the medium term, we should shift towards underground fiber optic networks and mandate disaster proofing of new telecom towers. Okay, and the long term vision should be to achieve 100% disaster resilient telecom infrastructure across the country. Okay, because we know that telecom infrastructure is essential for disaster response, but it is highly vulnerable to natural calamities. Okay,
So the next topic is monthly labor surveys. This topic is important for your governance section. Ministry of Statistics and Program Implementation is set to enhance the frequency and timelines of key macroeconomic data releases, including the introduction of a private sector capex survey, monthly labor force reports, and a revised schedule for the factory output data from this year onwards. So to enhance the timelines, the index of industrial production data will now be released on the 28th of every month instead of the 12th date. Okay, so this will reduce the reporting lag from 40 to 42 days to around a month. Okay, so the private capex survey will also be released in April, which will track capex expenditure over the past 3 years and projected investments for the next 2 years. It will also provide a sector-wise and asset-wise breakdown, offering insights into the industries likely to attract major investments. So, private capex can lead to economic growth. Okay, it can also increase employment and growth by funding projects like roads, railways, and housing. Private capex can also lead to higher corporate profits. So, Ministry of Statistics and Program Implementation will also release a new survey to measure capital investment intentions in the private corporate sector. The survey will also track capex expenditure over the past 3 years and projected investments for the next 2 years. It will also provide a sector-wise and asset-wise breakdown. Okay, so to meet the growing demand for timely labor market insights, Ministry of Statistics and Program Implementation will also start releasing monthly PLFS reports for rural and urban areas from the month of May. Periodic Labor Force Survey, which was launched in 2017, provides key labor insights like labor force participation rate, worker population ratio, and an unemployment rate. Okay. So the next topic is OPEC plus. This topic is important for your international relations. So Brazil government has approved the country's entry into the OPEC plus, which is an alliance of major oil exporting nations. OPEC plus is a group of 22 oil exporting countries which meets regularly to decide how much crude oil should be sold in the world market. These nations aim to work together on adjusting crude oil production so as to bring stability to the oil market. These nations come to an accord these nations came to an accord towards the end of 2016 to institutionalize a framework between OPEC and non-OPEC producing countries on a regular and sustainable basis. It comprises of the 12 OPEC countries plus Azerbaijan, Bahrain, Brunei, Kazakhstan, Russia, Mexico, Malaysia, South Sudan, Sudan, and Oman. Okay. So, what is OPEC? OPEC is a permanent intergovernmental organization of oil exporting countries. It was established in 1960 by the five founding members Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia, and Venezuela. But it has 12 members at this moment. Its headquarters is located in Vienna, that is in Austria. So the next topic is nuclear fusion. This topic is important for your science and tech section. So a world record for nuclear fusion has been smashed after the West Tokamak reactor in southern France was able to maintain plasma for more than 22 minutes. So nuclear fusion is the process by which two light atomic nuclei combine to form a single heavier one and release massive amounts of energy. Fusion reactions take place in a state of matter called plasma, okay, which is a hot charged gas made of positive ions and free moving electrons. So the sun, along with other stars, is also powered by this reaction. The tokamaks are the devices which are designated for this task. These are the nuclear fusion reactors. They can also be called as artificial suns because of the fact that these donut shaped machines replicate the processes that occur in the sun. There are currently about 202 tokamaks in operation across the world. A commercial tokamak will aim to use the thermal energy of plasma heated by fusion to heat water, create steam, and in turn spin a turbine which generates electricity. So nuclear fusion produces more energy than fission, about 4 times more energy than fission actually. So it doesn't produce any radioactive byproducts as well. The fuel to make fusion happen is simply heavy hydrogen atoms, and it is much safer than nuclear fission since fusion cannot create runaway reactions. Okay. So the next topic is National Dam Safety Authority. This topic is important for your governance section. So Supreme Court has recently directed a supervisory committee, which is chaired by the head of the National Dam Safety Authority, to look into issues raised by Tamil Nadu against Kerala concerning the maintenance of the Mullaperiyar Dam. So NDMSA is a statutory body which was made up in that
in 2021. So it operates with a clear mandate to regulate, oversee, and inspect dams. A key function of this body is to resolve any issue between the state dam safety organizations or of states. So it engages in nationwide awareness programs also to educate citizens about dam safety. It is headed by a chairperson and assisted by 5 members. Okay, it has its headquarters in New Delhi. So the next topic is Missing Tribe. This topic is important for your social issues. So Assam's largest tribal community, the Missing Tribe, recently celebrated the Ali A Aligang festival. So this tribe is an indigenous tribe from northeast India. They speak Tibeto-Burmese languages. Tibetans call them Lobas. They are one of the largest tribal groups of Assam. They have a life close to the rivers. Life and culture of these people revolve around agriculture and fishing. They originally practice the jhum or slash and burn cultivation. Their main festival, the Ali A Ligang, is also revolving around the jhum cultivation only. They practice the cult of Polo, which literally translates into the worshipping of the sun and the moon. Okay. So the next topic is bacterial cellulose. This topic is important for your environment section. So researchers have recently reported in a study that bacterial cellulose can be used as a bandage to significantly improve healing and regeneration in plants. So bacterial cellulose is a natural polymer produced by certain bacteria. It has been identified as an effective material for plant wound care. It offers a sustainable solution to plant injuries, reducing the reliance on chemical treatments. It also aligns with eco friendly agricultural practices. By enhancing the natural healing processes of plants, farmers can expect improved crop productivity and also contribute to food security and environmental conservation. So, what is cellulose? It is a molecule which consists of hundreds of carbon, hydrogen, and oxygen atoms. It is the main substance in the walls of plant cells. Humans cannot digest cellulose, but it is important in the diet as fiber. Okay, so these were our topics for today. Please also download the weekly current affairs compilation from our Telegram group today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.